In this course, we will study the application of low temperature to preserve the fish or fishery product. So, freezing technology. So, these are the syllabus. First topic is introduction of freezing technology, characterization of fish and surface. Then changes of fish after death. This topic is important. Changes in fish after death. So actually, what is happening when we are taking the fish from water? So what will happen? Fish will die. अगर मछलियों को पानी से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली मछली मर जाएगी. बट मरने के बाद after the death, what are the changes occurring in the fish body? So that we will study. That is called as post-mortem changes. होते हैं ना post-mortem changes. Then there is a spoilage of fish. This topic is also important. Spoilage of fish, generally, basically, we are having three kinds of spoilage. Autolytic spoilage is there, and then microbial spoilage is there, chemical spoilage is there. So this spoilage generally degrade the fish muscles, and it produces some undesirable compounds which are unacceptable. So spoiled fish we are not able to consume because of the production of these undesirable compounds, and it is degraded and spoiled. Then we are having a spoilage and pathogenic microorganism. The bacteria which is associated with the fish, that is called as inherent. There is two kinds of parameter, intrinsic parameter and extrinsic parameter. So the bacteria which are inherent to the fish, that is called as intrinsic pathogenic, intrinsic parameter or intrinsic microbes which are inherent to the fish. So suppose, say for example, freshwater fishes, they are having a different microbial flora, and brackish water fishes and marine water fishes, they are having a different kinds of microbial flora. जो microbial flora फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर फिशेस में पाए जाएंगे, वो हमारा मरीन फिश में नहीं पाया जाएगा. जो मरीन में पाया जाएगा वो हमें फ्रेश में नहीं पाया, बिकॉज देयर एनवायरमेंटल कंडीशन इज डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई चेंजेस इन फिश आफ्टर डेथ, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर किसी की डेथ होती है तो डेथ के बाद में क्या उसके बॉडी में, क्या उसके शरीर में क्या चेंजेस हो रही है. सो दैट इज पोस्टमार्टम चेंजेस. Okay, so this we will study. Then handling of fresh fish, this is also important. Suppose we are taking the fish from the water. Suppose समुद्र में गए, मछलियों को हमने कैच किया, या हमने तालाब में गया या रिवर में गया, मछलियों को कैच किया. After the catch, how we have to handle? And sanitation in processing plant. So suppose we are catching a fish from sea. So समुद्र से हमें उसको कहां लाना है? समुद्र के किनार में. So that is called as landing. So we are catching the fish in the sea, and that fish we are landing into the seashore, landing center, fish landing center, and there we are accumulating, and there we can also do the segregation and with species wise as well as size wise. On the deck we can also do the grading system. Then we have to do washing. Then after washing, it depends, if we are going for freezing, then we have to keep into the freezer. So generally in the sea we are using a vertical plate freezer. Most commonly it is used. So whatever the catch will comes, we have to dump into that freezer. That is called as vertical plate freezer. But in land installation, that means where the processing plant is there, so there we are using a horizontal plate freezer. Different kinds of freezer is there. Air blast freezer is there, plate freezer is there, immersion freezer is there, brine freezer is there, cryogenic freezer is there, liquid nitrogen freezer is there, then solid CO2 freezer is there. Different kinds of freezer will be also studied here.
So basically on the shore or the land installation where the processing plant is there, we are using a plate freezer most commonly or air blast freezer. But if we are producing a IQF product, IQF is the individually quick frozen product. So for that we require this cryogenic freezing or liquid nitrogen or solid CO2 because it is a individually quick frozen product. So handling a fresh fish is important. Suppose a person who are handling the fish and they are involved in the washing, they are involved in the grading, they are segregating the fish with species wise, size wise, and if the person is infected with some disease, then there is a chances they may transfer the microbes, pathogenic microbes from their body to the fish. And if that fish we are bringing to our home and preparing the fish, then there is a chances that we may also suffer from that disease or we may also infect ourselves. So that is the important. If the person are infected and handling the fresh fish, so that person we have to not allow to handle the fish. Then sanitation. Sanitation means we have to clean or we have to do hygienic practice. Wherever we are doing sanitation, sanitation है हमारा the utensil which is coming in contact with the fish. जो यूटेंसिल है जो हम फिश को वॉशिंग के लिए यूज करते हैं या प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं या ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, if they are coming in contact with the fish surface, then we have to clean with the chlorine, having a different ppm of this available chlorine. So that sanitation process is there in processing plant. Then principle of low preservation, chilling. Chilling is also important. Most of the throughout the country, the fishermen they are using the chilling. Chilling means icing. Chilling of fish, that means we have to do ice. मछलियों को अगर हम समुद्र से बाहर निकाले या फिर रिवर से बाहर निकाले या तालाब से बाहर निकाले, so after that we have to apply low temperature. Freezing or freezer, we require a lot of money to purchase or to buy a freezer. But icing, only you have to go to the ice plant and bring ice. And that ice we have to crush and then we have to apply over the fish to maintain the quality, to maintain the freshness of the fish. So chilling, if we are doing chilling, we can preserve the fish. Suppose fresh fish, if we are keeping at normal temperature, that means room temperature or environmental temperature, so it may spoil within 24 hours. After that, that fish is not fit for consumption. But if we are applying a low temperature, say for example chilling, same fish we can keep for 10 to 12 days by doing icing or by doing chilling. Understood? So we will study in the detail about the chilling of fish. Then then chilling of fish, methods and equipments for chilling, icing, quality of ice. This is important. The water which is used for producing the ice is important. If we are using a polluted water or dirty water and you are producing the ice from that polluted water or dirty water, and the same ice if you are using for icing or chilling of fish, that may contaminate your fish and it may reduce the shelf life of the fish and fishery products. Then refrigerated or chilled seawater is there. Refrigerated seawater generally we are using at the sea when we are going for the catching of fish into the sea. There on the boat or vessel we are using the refrigerated seawater. That means there will be a seawater container or tank will be there. In that tank we are applying a refrigeration system.
But if we are applying a refrigeration system to bring the temperature 0 degrees C or 1 degree C or below 5 degrees C, but not less than -1 degree C or not less than 0 degree C. So what will happen here again, that theory is applied. Principle is that, say for example, suppose fresh water is there, that means pure water, you can say fresh water is there. Freezing point of fresh water and freezing point of sea water is different. Why? Anyone? Freezing point of fresh water and freezing point of sea water is different. Hello? दोनों पानी एक टाइम में फ्रीज हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे? कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया? नो सर। व्हाई? सर मिनरल कंटेंट जो होता है मरीन वाटर में ज्यादा होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है सर। और भी क्या होता है? See, if we are putting a salt to the water, that means we are decreasing the freezing point. Suppose pure water is there, and in that pure waters, if we are putting a salt, so pure water may freeze at 0 degrees C. It may start solidification. 0 degrees C or -1 degree C. It may start solidification. But if we are putting a salt into the pure water, that means we are lowering the freezing point, and it may go up to -21 degrees C. That means if we are putting a salt into the pure water, we can go up to -21 degrees C. -21 डिग्री सी पे जाकर के वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। अगर हम सॉल्ट अप्लाई करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज यूटेटिक पॉइंट, और you can say that freezing point depression. Freezing point depression. So this is because of the salt. You can do the experiment in our lab. You take a water, okay, tap water or any this fresh water, and put some amount of salt at different concentration and put into the deep freezer, and you can record the time and temperature, at what temperature it is going to be solidify or freeze. So that is that because of the presence of the salt, the freezing point is depressed. We can reduce the freezing point. Then spoilage of fish during chilled storage, use of antibiotics and chemicals. So this is spoilage during the chilled storage. This means if we are keeping the fish into the ice, we are lowering the activity of enzymes, we are lowering the activity of microbes to reduce the spoilage, but we can't stop the activity of enzyme as well as the activity of microbes, but their activity will be same, not same, their activity will be at slower rate, not a optimum rate or faster rate. If we are putting if we are applying a low temperature, the activity of microbes and the activity of enzymes will be lowered, slowered. Okay? So that is the, but spoilage may occur. That's why we can keep up to 10 to 12 days only. After that, the fish will be spoiled. Then freezing of fish fundamental aspects, heat unit, freezing point depression. This is freezing point depression. Just now I told. Freezing point depression, that is the putting of salt into the water to depress the freezing point. Eutectic point, freezing rate. Freezing rate is the at which rate the solidification will start. Then methods of freezing, we are having a different. Quick freezing is there, slow freezing is there. It depends upon the time and temperature. कितने देर में कोई चीज
फ्रीज हो जाएगा, जल्दी होगा तो वो क्विक होगा, और ज्यादा समय लगेगा तो that will be a slow freezing. Then freeze drying also techniques is there. Freeze drying, the principle in freeze drying, we are applying the sublimation principle. Generally there is a phase changes of the matter. That means solid है कोई तो उसको liquid में convert होना ही पड़ेगा, अगर कोई liquid है तो उसको वेपर में जाना ही पड़ेगा। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये हमारा प्रोसेस है। अगर किसी को वेपर से बैक आना है सॉलिड में तो वो नॉर्मल प्रोसेस यही होता है, सॉलिड से हम लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से फिर वेपर में जाते हैं। बट अगेन हमको वेपर से बैक आना है तो वेपर को फिर से कंडेंस होना पड़ेगा, लिक्विड में आना पड़ेगा, और ये लिक्विड पे अगेन हम सॉलिड बैक हो सकते हैं। बट सब्लिमेशन प्रिंसिपल इज डिफरेंट। सब्लिमेशन प्रिंसिपल में होता है we are converting the solid stage to vapor without attending the intermediate state, and intermediate state is the liquid state. Understood? That means solid to liquid, that is the melting, liquid to vapor, that is vaporization or evaporation, vapor to liquid, condensation, liquid to solid, that is the freezing or solidification, but solid to gas, that is the sublimation. That means we are converting solid to vapor without attending the intermediate step, which is liquid. So that principle apply in the freeze drying process. Then physicochemical changes that occurs during freezing, mechanism of ice crystal formation. This is very important. If we are subjecting the fish into the freezer, to freeze the fish, there will be physicochemical changes in the fish muscles of the body. So physical, there will be a texture changes because we are converting the water which present inside the fish body, that water we are converting into the solid, that is the ice crystal. So there is an expansion. Suppose you can do the experiment in our lab or in your home also. If you are having a refrigerator or you are having a small deep freezer, you keep you take this glass का जो होता है ना हमारा पानी पीने वाला ग्लास, मेड अप जो ग्लास का ही बना हो, उसमें क्या करो, you have to keep that 100 ml or 200 ml जो कैपेसिटी का ग्लास है, and if it is closing system is there, then you can close. यानी तो कुछ पीवीसी का हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का बना हुआ है कोई प्लास्टिक, उसको भी अगर हम फिल करके टाइटली पैक करके अगर हम फ्रीजर में डाल देंगे तो वो वाटर जो है क्या होता है, एक्सपांड करता है by 6% volume. 6% volume. So there is a chances that bottle may crack. Bottle हो सकता है फट सकता है. Why? Because the water may expand if we are subjecting to the solidification, if we are keeping it to the freezer, so it may expand. So like that, if we are keeping the freezing to the freezer, the body of the fish may expand, so their texture may expand, their texture will be changed. Why? Because of the formation of the ice crystal inside the fish body. Then again there is this mechanism of ice crystal formation. It depends upon the which kind of freezing we are applying, whether it is a quick freezing or slow freezing. Then again there is a ice crystal formation within the cell, that is called as intracellular as well as the intercellular space. Within cell में अगर form हो रहा है, that is called as intracellular. और बिटवीन द सेल में जो स्पेस है और उसमें जो वाटर है, वो वाटर अगर हमारा क्रिस्टलाइज हो करके सॉलिडिफाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस. एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इंट्रासेलुलर एज वेल एज दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज डिफरेंट. इट डिपेंड्स व्हिच काइंड्स ऑफ freezing we are applying, whether it's quick freezing or slow freezing. So it is based on the freezing point. Freezing point of intercellular is different and freezing point of intracellular space is different. So that is the mechanism of ice crystal formation we will study in detail. Then preparation of fish for freezing.
how to we are getting a catch from the sea or river or ponds, then what we have to do, we have to clean the fish, then we have to dress the fish if we are producing a steak or if we are producing individually quick frozen products. Accordingly, we have to do processing and we have to do this dressing style, and then we have to keep into the freezer. So that how to prepare. So that selection is there, then preparation is there, and then freezing is there. That flow chart is there. Then changes that occur during frozen storage: microbial, physical, and chemical changes, protein denaturation, fat oxidation, and dehydration and drift. This is also very, very important topic. As I told, the physical and chemical changes occurs after the death of the fish, that is the post-mortem changes. But if we are keeping the fish into the freezer, if we are keeping the fish into the freezer, and after frozen also, if we are keeping the fish, because it is a frozen, fish हमारा frozen हो चुका है, तो we have to store somewhere. Where we will store? Where we will store? बोलो बोलो, कहाँ पे रखेंगे? फिश को हमने फ्रीज किया, तो हमें स्टोर करना है. where we will store? कोई बोल नहीं रहा है यार. हेलो हेलो. Yes, sir. मछली को अगर हम फ्रीज करेंगे, तो फ्रीज करने के बाद कहाँ उसको स्टोर करेंगे? सर आइस बॉक्स में. आइस बॉक्स में. और कोई? कोई बोल नहीं रहा है यार. यार एक कॉमन सब ये है हमारा. हम देखो, हम अपना जो मीन्स मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, और हमारा आइसक्रीम रहता है, आइसक्रीम फ्रोजन है, उसको कहाँ रखते हैं, हम स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर में. फ्रीजर में सर. कहाँ? कोल्ड स्टोरेज. सर ड्राई आइस. ड्राई आइस. सिंपल है यार. आइस हमारा ये आइसक्रीम कहाँ रहता है? दुकान में हम बोलते हैं हमको ये आइसक्रीम निकाल के दीजिए. फ्रीजर में सर. फ्रीजर में. कोई नहीं बोल रहा है. दैट मीन्स कोई आइसक्रीम खाया ही नहीं आजकल, आज तक. मतलब सीधा दुकान वाले को बोला हमको भैया ये आइसक्रीम चाहिए, लेकिन कभी अपने से खोल करके आइसक्रीम निकाला ही नहीं. सर आइसोलेशन बॉक्स होता है सर. कहाँ कहाँ? मतलब कोई आइसक्रीम टेस्ट ही नहीं किया, हमें लग रहा है. टेस्ट तो किया होगा सब ने, लेकिन किसी ने इस चीज पे गौर ही नहीं किया जो ये आइसक्रीम को हम रखें. रेफ्रिजरेटर देखो, दो चीज है, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर. बोथ आर डिफरेंट. रेफ्रिजरेटर हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 7 और 0 to 10 डिग्री सी. फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है लेस देन 0 डिग्री सी. सो if ice cream is there, we have to store into the freezer. जो हमारा डोमेस्टिक फ्रीजर होता है -20 वाला, there we can store. रेफ्रिजरेटर जो है हमारा, उसमें 2 कंपार्टमेंट होता है. एक होता है सिंपल स्टोरेज के लिए, जिसमें हम लोग पानी का बॉटल रखते हैं, या फिर अपना वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, मिल्क रखते हैं, कर्ड रखते हैं, वो रहता है. दूसरा रहता है हमारा ऊपर में जो सेक्शन होता है, दैट इज द फ्रीजर सेक्शन. So like that, after the freezing of fish, we have to store into the cold storage, having a temperature of -20 degrees C plus minus 1 or 2 degrees centigrade. Okay, so don't confuse. Then protective treatment is there. Polyphosphate glazing. Yeah, glazing is important. Glazing is the application of thin layer of ice over the fish.
to reduce or to prevent the dehydration into the cold storage. Then antioxidants is there, packaging is there, thawing of frozen fish is there. See, one is freezing, another one is thawing. Thawing and freezing is a reverse. Freezing, what we are doing, we are subjecting the fish and converting the water of fish to the ice. At the same time, thawing is just a reverse of freezing. Here what we are doing, we are removing the fish from the cold storage and we are taking a fish from cold storage and we are thawing. Where we are thawing? We can thaw into the water, we can thaw into the air, we can thaw into the microwave ovens, we can thaw into the dielectric treatment. Thawing is there. So thawing, in freezing, water is converted to ice crystal. In thawing, ice crystal will be melted into the water. Ice will melt into the water. So that is the thawing. Then methods of thawing, just now I told, transportation of frozen fish, cold chain. Cold chain is very important. Suppose we are having a processing plant. Okay, suppose we are having a processing plant. So somewhere fish will come and reach to the processing plant. Suppose समुद्र में हम हैं और समुद्र से मछलियों को निकाला हमने, निकाल करके उसको हमको प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना है. तो अगर हम समुद्र में हैं 10 नॉटिकल माइल 50 नॉटिकल माइल्स हम बाहर हैं, वहां से कैच करके हमको प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वेयर वी विल कीप द फिश, वी विल कीप इनटू द लो स्टोरेज, लो टेम्परेचर स्टोरेज, चिल्ड वाटर, चिल्ड सी वाटर और रेफ्रिजरेटेड सी वाटर, उसमें हम स्टोर करके रखेंगे और प्रोसेसिंग प्लांट में या लैंडिंग सेंटर पे जाकर के उसको लैंड करेंगे, देन वॉश करेंगे, या नहीं तो डेक पे भी हम वॉश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैसिलिटी. अगर हमारा फिश डेक बोट डेक अगर हमारे पास बड़ा है तो देयर आल्सो वी कैन डू द वॉशिंग, क्लीनिंग एंड सेग्रीगेशन, ग्रेडिंग, एवरीथिंग. देन लैंडिंग सेंटर, उसको हमको सेग्रीगेट करना है, ग्रेड करना है, एंड देन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट टू द प्रोसेसिंग प्लांट. प्रोसेसिंग प्लांट में क्या होगा, उसको हम वी आर प्रिजर्विंग, वी आर डूइंग फ्रीजिंग, एंड आफ्टर फ्रीजिंग वी आर स्टोरिंग टू द कोल्ड स्टोरेज. बट फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज इट हैज टू रीच टू द कस्टमर, कंज्यूमर के पास में ये पहुंचना है. तो फॉर दैट, राइट फ्रॉम द कैच ऑफ द मटेरियल्स और रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल्स, रिसिप्ट ऑफ द फिश और कैच ऑफ द फिश, until and unless it is reaching to the customer plate or consumer's home, from there to here we have to maintain the cold chain facility. That means अगर हम कैच के समुद्र में वहां पे अगर हम टेम्परेचर 5 डिग्री सी मेंटेन किए हैं, तो we have to maintain 5 degree C until and unless it is reaching to the landing center. Again from this landing center it is reaching to the processing plant, and if we are maintaining 5 degrees C, it has to be maintained on 5 degrees C temperature. Again in freezing, this processing plant freezing, after freezing we have to store into the cold storage. There we have to maintain minus 20 degrees C temperature, and from cold storage we have to transport to the market, retail market or wholesale market. From there also we have to maintain the cold storage temperature because you have frozen the fish. So here we don't require to maintain 5 degrees temperature because your product is frozen. So you have to provide such temperature that the fish will be frozen, that the fish will be in frozen condition. That means minus 20 degrees C you have to apply to take the fish from cold storage of the processing plant until and unless it is reaching to the market, and from the market you can distribute to the consumer or customer. So that is the cold chain that we have to maintain from right from the catch of the materials to the until and unless it is reaching to the consumer home or consumer hand.
Then quality control is there. Quality control is very important. We have to maintain quality throughout the process, right from the catch of the materials to the distribution channel. Then HACCP, HACCP, that is the hazard analysis critical control point in freezing industry. Suppose processing plant is there. In that processing plant, if any processing plant is there, manufacturing unit is there, they must have to apply a principle of HACCP, that is the hazard analysis critical control point. Basically, this HACCP is having 7 kinds of principle that the processing plants are applying, or any food manufacturing plants are, they must have to apply 7 principle of HACCP. ठीक है? तो टुडे ये हमारा जितना था साढ़े का साढ़ा, दिस वाज द सिलेबस इन ए ब्रीफ हमने बताया है. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क. हेलो. यस सर. हाँ, अभी जितना हमने ये 13 का 13 हमने ये लेक्चर शेड्यूल दिखाया, उसमें अगर हमें कुछ पूछना चाह रहे हो तो यू कैन आस्क. एक दिन में हमने सारा फ्रीजिंग खत्म कर दिया देखा जाए तो, बट हम डिटेल में अभी जाएंगे. ये तो सिलेबस हमने खत्म किया है. हर टॉपिक में हम डिटेल में जाएंगे. कुछ पूछना है तो यू मे आस्क. कोई बोल नहीं रहा है यार. नो सर. सब समझ में आ गए. बोल ही नहीं रहा है. कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो ना, पूछो ना. आ गया है सर समझ में थोड़ा बहुत, और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा. अच्छा ठीक है. Sir, तो हाँ बोलो. hello. हाँ Sir, बोलो. what is the relation between that freezing point and the enzymatic activity of a particular fish we consider? Do they affect each other? जी देखो, इंजाइमेटिक एक्टिविटी कोई भी इंजाइम हो, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. एक्टिविटी टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट हो गया. तो एंजाइम का एक्टिविटी जो ऑप्टिमम होता है, अनटिल अनलेस वो टेम्परेचर उसको मिलेगा तब तक वो अपना एक्टिविटी फास्ट नहीं दिखा पाएगा. ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वो अपना एक्टिविटी अच्छे से कर पाएगा. तो फिश के बॉडी के अंदर या फिश के बॉडी के मतलब इंटेस्टाइन हो या फिर उसका शरीर हो जिसपे माइक्रोब्स है, 2 kinds of enzymes is there. One is microbial, another one is intrinsic. Intrinsic enzyme, that means the enzyme which are inherent to the fish. So वो enzyme जो है फिश के बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वो पूरा ऑप्टिमम एक्टिव है. बट जब हम उसको मछलियों को बाहर निकालेंगे और उस पे अगर हम आइस डाल दें या फ्रीजिंग कर दें, दैट मीन्स जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था जिसपे वो एंजाइम अपना एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट कर रहा था, उस एक्टिविटी को हमने स्लो डाउन कर दिया. व्हाई? बिकॉज वी आर सप्रेसिंग द टेम्परेचर, वी आर लोअरिंग द टेम्परेचर. That's why the activity of the enzymes will be lowered, reduced, decreased. But we can't stop the activity of enzymes. We can only reduce. Okay. So basically it's Thank you, related sir. to the temperature. Bolo. Not only this enzyme, microbes is also related to the temperature. That's why we are storing at low temperature. और कोई? दो मिनट बचा है, बता दो. अभी उतना नहीं समझ में आया होगा. फ्रीजिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब ये कोर्स है, सब्जेक्ट है.
एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा चीज करते हैं बट उस पर गौर नहीं करते हैं। अगर गौर करेंगे ना तो हमें पता चला अरे ये ऐसा चीज होता है। तो फ्रीजिंग इज वन ऑफ दैट। अभी इतने दिनों से आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन आइसक्रीम कहाँ रहता है पता ही नहीं है। और उसको हम बाहर में अपने टेबल पे रख दें तो क्या होगा, वो आइसक्रीम रहेगा, सारा नो का सारा सर। पिघल जाएगा। तो आइसक्रीम हम नहीं खा पाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, फ्रोजन टेम्परेचर। दिस मीन्स -20 डोमेस्टिक फ्रीजर इज देयर, -20 डिग्री C वी हैव टू स्टोर। बताओ और कुछ पूछना है तो यू कैन मे आस्क। 1 मिनट और बचा हुआ है फिर क्लोज हो जाएंगे ये। यस सर। सर पूछना था कि वो जो कोल्ड वाटर फिशेस अगर हम लोग कंसिडर करें कोल्ड वाटर फिश का, तो उसका डेथ के बाद उसके फ्लैश का डिस्ट्रक्शन फास्ट होता है क्या? जो ट्रॉपिकल कंट्री की फिशेज हैं और जो मीन्स क्या बोलेंगे टेम्परेट कंट्रीज के फिशेज हैं, दैट मीन्स जो कोल्ड वाटर है और वार्म वाटर है। तो कोल्ड वाटर का फिश अगर कोल्ड कंडीशन में है तो उसमें उतना चेंजेस तो होगा नहीं। अगर उसको कोल्ड वाटर को ला करके अगर हम वार्म कंट्री में या वार्म वाटर में डालेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर। जनरली ट्रॉपिकल कंट्री का जो फिश है वो जल्दी खराब होता है कंपेयर टू टेम्परेट कंट्रीज। ओके सर।